that government improving ease of business processes, single window system. There is a single window system which is started in industries. There is a single window system, but that has to come into the more than 90 to 100 licenses which are required to open up a hospital. If a hospital can apply and all the licenses go through the government itself, it will be much easier, much faster to open a hospital. Of course, these things used to be digitized and online. Financial incentives again become another great way to attract investment. If we, as a state, if we provide incentives, that will again go a long way to improve investment. We are already observing changes. We have, weed away the challenges of financing, weed away the challenges of expertise, talent, all those things. Private sector from within our state, from outside state, would definitely be interested into partnering in PPP projects for the states. Now, improving capacity, level of care and quality of care of government hospitals. Now, I specifically say government hospitals, even though there are a lot of private providers here. In a high quality, large size government hospital becomes a fulcrum for growth of healthcare into the region. Whichever city you see, whether it is PGI Chandigarh, whether it is SGPGI Lucknow, or for that matter IGI, who are providing very high level, high quality of care, the private sector immediately starts changing themselves. Suddenly you will find a sprouting of larger hospitals, 100 bed, 150 bed, 200 bed hospitals in that vicinity. So government hospitals needs to improve the quality. If government tries to select medical colleges in major cities of Bihar, major districts of Bihar, and improve the functioning, improve the infrastructure and human resources of those 6-7 medical colleges only, you will see those cities will have very high quality of organized healthcare system, so to say. Then all the theme I said, organizing healthcare, private, specifically private healthcare through incentives, competitiveness and regulation would be another way to improve healthcare system right away. I was talking about our culture, our own, cultural aspects which can have which will have tremendous role to play. So we have this Bihar Yoga School based out of Munger. Now it's such a beautiful school. People are coming from faraway places, countries, just to be there for 10 days, 15 days. Why cannot we replicate this to other districts also? And Bihar, like Kerala, surprising is that the states which never had this culture are now imbibing this culture because it brings in revenues. It brings in people from outside. It enhances the brand of the state itself, right? So why cannot Bihar also, now that we already have such a beautiful place and such a beautiful culture, why cannot we use that? So just to conclude, going from here, incremental progress, linear growth will not help to change much in Bihar in next 10-15 years. Bihar is in a state, in a place from where we need to leapfrog. We cannot just climb one step at a time. We need to leapfrog now to change the whole healthcare system and to reach to that top level of healthcare states in India. So from all the sides, public expenditure is to increase all sides, focusing on preventive and wellness. I already discussed the culture we have, within the general population, how much we have good feelings for our Ayush care. So why not enhance that, invite that within modern medicine also? And the country is already doing that. Why cannot we do that in Bihar also? Elevating the quality of healthcare. Sir was talking about it, and we feel very strongly
that if we improve the quality of care of even existing infrastructure, this will give a push for all the newcomers, all the new doctors, all the new hospitals which are coming. They will have to compete with the existing quality hospitals. So improving quality will play a huge role in improving the care for the patient, and embracing tech-led intervention to accelerate the growth. Now, as I said, we have to leapfrog. So we need to do all the things simultaneously. Infrastructure, funding, quality, everything has to go simultaneously. But then to leapfrog, we need to immediately change the quality of the care, existing care. We need to leapfrog in quality. It's not that difficult. We don't need humongous investments in that. We need huge investments to open up hospitals. We don't need huge investments to improve the quality of the existing care. So we should do it right away. We need to invest, which will help improve the quality, improve efficiency of care, improve efficiency of hospitals, so to say. So this is what we have for you as a Vision 2030 today. Well, thanking him for a very learned talk given to the subject. Some of the time to share my experience. Looking at the fact that most of the nursing work being done in the private clinics or many of the government hospitals also by unqualified nurses. So I started a nursing college, made investment what was required, got admission of 40 nursing students. They all paid the fee. But out of 40, hardly 8 or 10 will come to attend the class. And that's not the same regularly. Some did this one, some the other one. And at the end of the course period, they all passed out with distinction. The exam conducted by the Ministry of Health, Government of Bihar. So for 3 years I tried this. Then my own conscience refused to carry it further and close it down. So this is the experience I want to share with you of what can be done to improve it. Ankur, I totally agree with you. The gap which we have got with Bihar was the other states, especially south. We cannot go state by state. Acres land. We are in process of acquiring another, make it 22 acres to start for a medical college in the name of Swami Sadaram Society. And nursing college name will be Mary McDonald College of Nursing. This is the lady which I met in the middle of Atlantic in one of the Scottish islands. A 70-year-old lady who came to me to see one of the weekend Saturday evening with a swollen arm. And the doctor is referred as an auxiliary vein thrombosis, which is a very emergency thing. We need to operate it then and then. But it was just arthritis. So she asked me after consultation, which part of the world come from? So I come from India. Then this 70-year-old Scottish lady, आप हिंदी बोलते हैं? मैंने कहा हम हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी कैसे बोलते हैं? तो बोली मैं 30 साल लखनऊ टाउन जो जबलपुर के पास में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड में काम किया हूँ. Last 8 years started orphanage. She adopted 2 Adivasi children, and at that time Bihar and children had come to Patna because the winter is a very low, very bad winter in middle of Atlantic, and she became our second mother, and she was so attached to me, and her life was, with the children in Patna town. Many times I see her very sad. I said, Mary, what happened? Very sad. Oh, my grandchildren are not doing well. तो हम सोचे कि अगर नर्सिंग कॉलेज करेंगे तो उसके नाम से. These are our immediate plans. From community point of view, our motivation of going back. Bhaiya over 92 visited England and motivated me that let's come back from Karnataka, me and you from England, to start hospital. Now we want to fan out in the community. We have started 25-bedded Ruben Community Hospital in Rajgir. And we are going to start another small
clinics. And my vision is also to start medical tourism in Bihar. And what is the potential? It is the Rajgir has got very scenic place, and winter is a time when a lot of people come for the health from other parts of India because of the hot spring. So this is a place where we feel that we have a holistic health center, well-being center, where people can come, can have a Ayurvedic treatment, can have naturopathy, and the hot spring, pleasure of the hot spring. So that's where talking with a business person in Rajgir, with a young man who was working in Southeast Asia in Bangkok. Because of COVID, he came back and all said, I don't want to go, Dr. Sahab, aapke saath hum kuch karenge. So, and I'm also talking to the head of tourism department in Bihar, and he's going to meet me next week, and we're trying to attract that. The hospital, next hospital which we are going to build near AIIMS, we want international accreditation so that we can tap this for these countries. Even today, Bombay and Delhi for us are very costly, but it's cheaper than Bangkok and Manila and other Southeast Asian countries. It is cheaper. So there are some disease where they can have a 3 weeks, 1 month package. Spend 1 week, 10 days in the hospital, and they can same package. They can go around all the. So these are our future plans, and we need what I said. We doctors come together, we invest together. Finances are there, and Anwar ji as a low dynamic financer, so we have got no problems. He will give us money and should also connect with other investors and all that. So yeah. So I think we are all there. We have to, I always speak, we have to, I'm not in the wrong way, but in the right way, we have to have a strong Bihari sub-nationality. मुझे ये देखना है कि मैं किसी से कम क्यों हूँ? We are not all Biharis spread over the world. हम कम क्यों हैं? Because we are not having that competitive sub-nationality. हमसे आगे क्यों लिसा हो सकता है? So that is my theme. My doctors will motivate them. So thank you very much for giving me impetus. We will do it. Thank you. Thank you so much, Mr. Ankur Bhati, sir. Improving the quality will improve the care of patient. And thank you, Dr. Satyajit, sir. Definitely, let's pray. Let's pray together. Let's work together. And cross your fingers so nobody can point out the fingers of Bihar healthcare. So we all are working for that. And moving further, मैं अब निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि वो आए और अपने विचार हम सभी के समक्ष रहे हमारे बीच हैं माननीय मंत्री महोदय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ बिहार श्री समीर कुमार महासेठ जी आज मौर्य होटल के इस सभागार में उपस्थित CII हेल्थ टेक के 2023 के ऑर्गेनाइजर और हमारे डैश में बैठे हुए रेस्पेक्टेड सत्यजीत बाबू, हमारे CII के चेयरमैन सचिन चंद्रा जी, हमारे श्री अशोक घोष जी, डॉक्टर संतोष कुमार जी, रेस्पेक्टेड नीलाभ केशव जी, डैश में बैठे हुए रेस्पेक्टेड आदरणीय डॉक्टर सदानंद बाबू, हमारे भविष्य डॉक्टर अस्मिता गुप्ता जी और मैडम अनुराग जी, अंकुर भारती जी जो बहुत अच्छे ढंग से विजन ऑफ 30 तक का उन्होंने दिखाया, प्रेजेंट किया, आशीष सतपति जी, सुदीप बाबू, हमारे सामने बैठे हुए कर्नल अजीत कुमार सिन्हा जी, हमारे रेस्पेक्टेड BK राणा जी, संजय गोयनका जी, नरेंद्र बाबू और इस सभागार में बैठे हुए सभी हमारे डॉक्टर्स और पूरे बिहार के इस गरिमा को बढ़ाने वाले सभी हमारे आतिथ्य, निश्चित तौर पे ये हम CII को बहुत धन्यवाद देंगे कि जिनका ये सोच कि इस लाइन में हम कैसे टेक में हम बिहार को कैसे आगे ले जाएं। हमें लगता है, अपनी फीलिंग है कि बिहार को जब भी कोई व्यक्ति साथी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के साथी हैं, हर एक आदमी
जब कोई काम करता है और कुछ गलतियों को ढूंढना है तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके हम लोग कुछ गलतियां को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ऐसा बिहार में अगर है तो इसे दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो छोटा हम नहीं देख पाते हैं, छोटी सी गलती आपने किया है, लेकिन अगर मैग्नीफाइंग ग्लास उस पर लगा दिया जाए तो वही चीज छोटा छेद बड़ा बड़ा दिखता है। बिहार के प्रति ये सोच जो है हमें लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं बिहार पूरे देश में सेकेंड लार्जेस्ट भविष्य हम समझते हैं, जो हमारा टीदिंग प्रॉब्लम ऑफ द बिहार है, शायद ये समाप्त हो चुका है। अब हमें आगे बढ़ने का सोच बना करके, और जो बिहार के बाहर के लोग आज तक बिहार से बाहर जाकर के भी बनाए और पुनः अपना एक पैर बिहार में अगर ले आए, तो हम नहीं समझते हैं कि बिहार का जो आज टीदिंग प्रॉब्लम से जो फास्टली हमको निकलना है वो तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन चर्चा जब चलती है तो अगर ये चर्चा हो कि पहले अंडा होगा कि पहले मुर्गी होगा, इस समझ में नहीं आता है कि पहले मुर्गी होगा कि पहले अंडा होगा। डिसाइड पहले कर लें। अरे हम तो देख रहे हैं कि आज से जब IGMS खुला था तो अभी जो बातें चल रही थी, अंकुर भारती जी बोले रेडियोलॉजिस्ट में वहाँ पे या जितने भी डॉक्टर थे, पेशेंट क्या संख्या थी वहाँ। अच्छे कर्नल पंजियार साहब थे वहाँ पर पोस्टेड, और जब उनके पास फर्स्ट हाफ में जाते थे तो कहते थे कि तब तक हम कॉफ़ी मंगाते हैं, चाय मंगाते हैं, आप बैठ जाओ, 10 पेशेंट से ज़्यादा नहीं है, इसके बाद आराम से बैठ के बात करेंगे। मतलब 1 घंटा डॉक्टर देखते थे और 6 घंटा 7 घंटा उनको पेशेंट नहीं मिलता था। और ये इनिशियल डेज की बात है जो हमने खुद ही अपने आंखों से देखा है, और शायद हमारे सहजानंद बाबू इसके मैंने लोगों को जानते भी थे और चीज़ों को देखे भी है। तो अगर हम वहाँ से स्टार्ट करें कि जो हमारे पास मेडिकल कॉलेज, हम नहीं समझते हैं पूरे देश में हमारा हमसे ज़्यादा पुराना किसी का मेडिकल कॉलेज होगा, चाहे वो डेंटल मेडिकल कॉलेज हो चाहे मेडिकल कॉलेज है। क्या कारण था? देश आगे बढ़ गया, हम वहीं के वहीं रह गए। आखिर कुछ तो कारण होगा। इसका मतलब है कि यहाँ आपको बाहर के नहीं बेंगलोर पढ़ाने के लिए जाइए मेडिकल कॉलेज में, तो अपने बाल बच्चा को पढ़ाइएगा। अब बिहार में जो कोई व्यक्ति मेडिकल कॉलेज खोले हैं तो उसे हम खोलने नहीं देंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बिहार कोचिंग का बिहार से पुराना कहाँ का इतिहास है? कहीं का इतिहास नहीं है। हर एक चीजों का इतिहास बिहार का ही है, और जो बिहार में सफल कराने का प्रयास हुआ, कहीं ना कहीं मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके उसके निगेटिव चीजों को हाईलाइट करके हमें परेशान करने का और पीछे करने का जो साजिश हुई है, इसीलिए हमारा बिहार पीछे गया है। मुझे जो लगता है, हो सकता है हमारा एक्सपीरियंस कम हो, यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप इतिहास उठाइए, इक्वल फ्रेट सिस्टम पर उद्योग हमारा कहाँ चला गया, कुछ छिपा हुआ नहीं है। उस समय 7 मेडिकल कॉलेज से जब बिहार और झारखंड जब था तो बहुत बड़े तो 9 मेडिकल कॉलेज हुए। 3 मेडिकल कॉलेज जो नए लोग खोले उनको खोलने नहीं दिया गया, और कहानी हम कहने लगेंगे तो शायद उस समय की बात है। और 3 कैसे मेडिकल कॉलेज खुले कि बिहार के पेरेंट्स कहते थे हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं। अब वही उससे बेटर नहीं है बाहर से बाहर, लेकिन मेडिकल क्या है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस बात का कि आज तक बिहार सरकार का अगर एक पॉलिसी बने, उस पॉलिसी के आधार पर धरातल पर हम उतार लें। आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनी ढंग का। पहले बना 6 साल आपको मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करिएगा, गांव में जाना पड़ेगा। बाद में कि नहीं कौन सा हॉर्स ट्रेडिंग हुआ, दोनों को मिक्सअप कर दिए। आखिर क्यों ऐसा हुआ? कोई ना कोई तो ब्रेन वहां बैठा हुआ है कि बिहार को बदनाम करने का। हमने क्या कहा कि पहले की जो पॉलिसी थी कि आपको इतने दिनों में कि नहीं प्रमोशन देंगे, 6 साल के लिए पहले आपको गांव में सेवा करना पड़ेगा,
गांव में सेवा करने, अरे पॉलिसी बनी तो आप चेंज करो, हमको नहीं दिक्कत है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए यहाँ जो भी चीज बनता है एक ब्रेन लग जाता है कि उसको तोड़ने का प्रयास करें। ये कौन है? हमारे ही बीच के लोग होंगे। तो हम इसलिए कहना चाह रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि बिहार अगर आगे बढ़ जाएगा तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिहार से ज्यादा इंटेलिजेंट कहीं नहीं है पूरे देश में, ये आपको मानना पड़ेगा। और हमारे बिहारी इतने इंटेलिजेंट हैं कि अभी आपने देखा होगा कि 10 सेकंड के लिए बनाने कहते हैं, एप्पल को भी रोक दिया। तो हर एक चीजों पर बिहार का ही अभी जो गया तो मैंने चांद पर, इसमें मधुबनी का भी था और लोगों का था। कहीं ऐसा नहीं है किसी चीज में जो बिहार के लोग नहीं है। बिहार का हर एक चीज आगे है, लेकिन उसको कैसे दिक्कत करने के लिए कौन सा टेक्निक अपनाया जाता है, इसलिए हमने कहा कि छोटा सा है तो मैग्नीफाइंग लगा करके, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के, बड़े अक्षरों में छोटा छेद है तो बड़ा छेद दिखाते हैं। ये परिपाटी जो चली आ रही है उसका अगर शोध हो जाए, और ये शोध हो जाए कि बिहार में अगर मान लीजिए जितने मेडिकल कॉलेज है, हम समझते हैं अभी 21 मेडिकल कॉलेज की बात हुई है, लेकिन जितना जिला है, अगर 38 जिला है तो 38 का प्लानिंग हो गया है मेडिकल कॉलेज खोलने का, 38 का इंजीनियरिंग कॉलेज का, ITI का। तो हमने क्या कहा, जो पहले बिहार था, हम सीधे प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हैं। सड़क, बिजली, पानी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर एक चीजों में। लेकिन आवश्यकता है आप जैसे व्यक्ति को पुनः आगे बढ़ करके जिस विधा में, जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़ें। पहले साल भर में कि नहीं हमारे यहाँ मैंने इंडस्ट्रीज का जमीन मिलता था, अभी 1 सप्ताह में मिल रहा है। तो 1 साल में जो मिलता था अभी 1 सप्ताह में मिल रहा है, तो क्यों नहीं लोग आ रहे हैं? हम नहीं समझते हैं कि इससे बढ़िया कभी कोई था, लेकिन ये मान के चलिए कि जो काम होगा उसका रिजल्ट भी मिलेगा। अभी केवल पूरा सर्टिफिकेशन, जैसे वर्ल्ड में कोई स्पोर्ट्स होता है या कोई स्पोर्ट्स होता है तो पहला जीतता है गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, ब्रॉन्ज मिलता है। अभी केवल 1 साल का प्रयास हुआ, पूरे देश में तहलका मच गया कि उद्योग विभाग कुछ बिहार में काम कर रही है, और पेट में दर्द भी हो रहा है। और सर्टिफिकेशन में भारत सरकार अभी सर्टिफाइड किया है कि जेड सर्टिफिकेशन में बिहार पूरे देश में नंबर 1 आ गया। तो छोटा सा प्रयास करते हैं तो नंबर 1 में आ जाते हैं। तो मेडिकल कॉलेज का अभी हमने देखा, अभी हमारे माननीय तेजस्वी जी डिप्टी CM बैठे हुए थे तो हम लोग बात कर रहे थे, को भी कार्ड के नहीं दिया, सामने बैठे वाले कह रहे थे बिल मिलिंडा गेट्स के ये है कोई हरी मेंशन जो बिहार को देखने के लिए। तो संयुक्त से बैठे हुए थे तो चर्चा वही हो रही थी कि बिहार में जो मेडिकल कॉलेज है, चाहे पूरे 38 जिला में है, गरीब को जो हम नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। और उस प्रेजेंटेशन के बाद हमको लगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे पहले समय में हम लोग सुबह 4 साढ़े 4 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे तो दादा दादी कहते थे ब्रह्म मुहूर्त में जो नहीं दौड़ेगा उसको सवेरे का नाश्ता नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हेल्थ सेक्टर की बात इसलिए हम कर रहे हैं, स्वस्थ नहीं रहिएगा तो बीमारी पैदा करेगा। और गांव घर में एक दवा खाने का जो प्रवृत्ति है कि एक दवा खाने से ठीक हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं 10-10 टैबलेट लोग खा रहा है कि 12 टैबलेट खा रहा है, क्यों खा रहा है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। दुकान पर दुकान खुले जा रहा है, न तो फार्मिस्ट है, न फार्मेसी के हैं, न सिस्टर है, नर्स है, न ये है। लेकिन आप इतिहास उठाइए, सबसे ज्यादा यही के लोग सब जगह कर रहे हैं। पुनः हम समझते हैं कि जो हमने कहा कि टीबी प्रॉब्लम सब बाहर निकल चुके हैं। 38 जिला में मेडिकल कॉलेज की प्लानिंग है। 38 जिले में कि नहीं जो जितने फार्मेसी या जितने लोग आ रहे हैं सबको मैंने अभी हमने देखा है कम से कम 40-50 लोगों को मिला है परमिशन मात्र 2 महीना के अंदर।
तो जितना फास्टली हम बढ़ना चाहते हैं तो हम बढ़ने का प्रयास करेंगे, और जब बढ़ने का प्रयास करेंगे तो रोक कौन रहा है। बस ये एनालिसिस में एक हम आपसे आग्रह करेंगे कि एनालिसिस ये भी एक एड ऑन होना चाहिए कि हमारे बिहार में कौन ऐसा है जो परसेप्शन भी बर्बाद करने में लगा हुआ है, रोकने में भी लगा हुआ है, उसको हाईलाइट करने की जरूरत है। अगर हम अपने लोग को तारीफ नहीं करें, अपने डॉक्टर की तारीफ नहीं करें, अपने मेडिकल कॉलेज में हम बड़े सबों का तारीफ नहीं करें, जाके रगड़ा करें, झगड़ा करें, उससे पेशेंट को डॉक्टर अच्छे ढंग से देख लेंगे क्या? हमको नहीं लगता है। ये जो हमारा जो संस्कार रहा है कि बिहार से बाहर चले जाते हैं, सारा एटिकेट, मैनर, डिसिप्लिन सब एकदम सही हो जाता है। अब बिहार में जहाँ लैंड करते हैं, हवाई जहाज से लैंड करे कि ट्रेन से लैंड करे, फिर वो अपना स्टाइल में आ जाते हैं। पता नहीं उससे क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे नहीं समझ में आता है। हम बहुत बड़ा स्पष्ट कहना चाहेंगे, जब तक आप परसेप्शन को नहीं बदलेंगे बिहार को, आप सभी जगह आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहुंचने के लिए आपसे बड़ा दुश्मन पूरा देश के जितने भी स्टेट हैं जहां से आपका प्रोडक्ट बिहार में आ रहा है, वो सब आपका दुश्मन बैठा हुआ है। क्योंकि जिस दिन आप डेवलप हो जाइएगा, अपना प्रोडक्शन करिएगा, अपना जीडीपी रेशियो बढ़ेगा, अपना जीएसटी बढ़ेगा, आप आत्मनिर्भर बन जाइएगा, तो वहां नौकरी करने कौन जाएगा? ये जो है ये बीच का है। इसलिए हमने कहा पहले आप पूर्णतः हिम्मत बढ़ा करके सोचिए कि आपसे अच्छा डॉक्टर कहीं नहीं है, पूरे देश में कहीं नहीं है, दुनिया में नहीं है। और सीआईए का जो ये प्रयास है, इससे एक बात निकल के आवे कि हम टारगेटेड, जो पहले इतने दिनों में कहां पहुंचा बिहार, हम कितने दिनों के अंदर पहुंचा सकते हैं, ये डेवलप करिए। अब 5 साल के अंदर करिए। निश्चित तौर पर सीआईए को बहुत धन्यवाद देंगे। इन चीजों को लेके आए हैं, जितने हॉस्पिटल खोलना है खोलिए, उद्योग विभाग को आपको हर जगह मदद करने के लिए। लेकिन बताइए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? कोई डॉक्टर अपना सोचेगा हम पढ़ाई भी किए हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर दे, जाके लॉस हो जाएगा, कहाँ से फिर चलेगा? वो तो व्यापार है ना। तो व्यापार के लिए आप प्रोजेक्ट नहीं बनाइएगा, आपको पता ही नहीं है ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। आप ढेर सारा डॉक्टर रख दीजिए, पेशेंट ही नहीं रहेगा। कौन डॉक्टर का कौन कहाँ रखिएगा, पता ही नहीं चलेगा। कौन जिला में क्या है, तो उसका हमारा कहना एक रिसर्च ऐसा हो, जब उद्योग विभाग हर एक जगह 5 साल के लिए हम आपको मदद कर रहे हैं, हो सकता है 5 साल से ज्यादा आपके लिए पॉलिसी लावे, एक अच्छी पॉलिसी लावे जो आपके लिए हितकर हो। लेकिन आज तक तो जो है उस पर तो उतना लाभ हम नहीं देख रहे हैं। जब लाभ ही नहीं देख रहे हैं तो हम कैसे? आजकल तो कहीं भी किसी को कहिएगा, अट्रैक्ट तभी होता है जब उसे अपना फायदा हो जाता है, चाहे कहीं हो। हर एक इंडिविजुअल का लोभ है कि हमको क्या फायदा है, हम इसके लिए क्यों करें, तो उसको फायदा दिखाना पड़ता है कि ये करने से आपको फायदा है, इस तरह का फायदा है। बिहार के ही पेशेंट बिहार में रहे तो बिहार के सारे हॉस्पिटल्स अच्छे ढंग से चलेंगे। ग्रास रूट से पंचायत स्तर तक खोलना है कि मैंने आपको ब्लॉक स्तर तक खोलना है, एक प्लानिंग कर लीजिए। इसलिए कि जब तक रिसर्च ही नहीं होगा तो क्या होगा? अभी हमारे मधुबनी में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, जो आजादी के टाइम का था, खपड़े, वो अभी हम तोड़वा के बनवा रहे हैं। अब सोचिए कि इतने दिनों में 75वां साल चल रहा है और अभी बना है। सच्चाई की तरफ हम क्या कहना चाहते हैं? पहले अपने में झांकिए, हम जहां हैं हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। कहीं से भी नहीं कहेंगे कि हम बहुत पहलवान हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जो सीआईआई का जो ये प्रयास है, और सारे यहाँ बैठे हुए हैं और सभी लोग, एक मैसेज जरूर है कि जिस जगह पे परसेप्शन अगर कोई खराब करने वाला हो, वही हल्का सा उसको डांटने का हो, डपटने का हो, कि अच्छा बात करके उसको दिमाग ठीक करने का हो कि भैया पहले बिहार तब ना कहीं है। सारा देश का इकोनॉमिस्ट सब समझा दिया, भारत के प्रधानमंत्री हो चाहे किन्हीं को, कि आपकी बिहार की तरफ 5 स्टेट है,
अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, अगर बिहार नहीं डेवलप करेगा तो देश डेवलप नहीं करेगा, ये बात स्पष्ट है। लेकिन हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। आप ही बताइए कि आपके यहाँ मोटरसाइकिल, गाड़ी जब ये था, किसी भी फाइनेंसर नहीं था, कितनी गाड़ियां बिकती थी, कितना मोटरसाइकिल बिकता था, और आज जीरो लेवल पे हो गया तो साइकिल गायब हो गया। साइकिल गांव में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन मोटरसाइकिल का लाइन लग गया। तो वही चीज आपने कहा कि इंश्योरेंस जब मान लीजिए हम करते हैं, तो जब एक एक व्यक्ति इंश्योर्ड हो जाए ग्रास रूट पे, तो हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस वाला भी जो है यहाँ सोचेगा कि हम बिहार में इंश्योरेंस करें कि नहीं करें। कौन, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके फिर आ जाएगा, छोटा गलती करेगा उसको इतना बड़ा बड़ा गलती दिखाता है। हर एक चीजों में हम यही देते हैं, गलती करता नहीं लोग उसको पनिशमेंट पर पनिशमेंट दे रहे हैं। अरे भाई एक बार आप बोलो कि आगे बढ़ो, तुम हर एक ब्रेकर को कि नहीं आगे बढ़ोगे तुमको अवार्ड देंगे। हर एक जगह अवार्ड सिस्टम हो तो निश्चित तौर पे आदमी जिस ढंग से कोई अच्छा काम करता है, फादर पीठी ठोकते हैं तो आगे बढ़ता है। हमेशा डांटते रहिएगा, हमेशा डपटते रहिएगा, कभी आगे नहीं बढ़िएगा। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा टीचिंग प्रॉब्लम से बिहार को हम आगे निकाल लिए हैं। लेकिन जिस बात के लिए चर्चा कर रहे हैं, इतना ही कहेंगे, आइए उद्योग विभाग जिस प्रकार एक साल के मेहनत से ऑल इंडिया में टॉप कर गए, हो सकता है गोल्ड में, सिल्वर में और ब्रॉन्ज में, तीनों में टॉप करने का 5 साल का प्लानिंग हम लोग करेंगे, बिहार को आगे ले जाएंगे। और हॉस्पिटल के मामले में फिर से रिसर्च करें, और जितना भी आप लोग कहेंगे गवर्नमेंट तक आपकी बातों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर हम कुछ ज्यादा बोल दिए होंगे तो माफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। आपके अभिभाषण से हमारी उम्मीदें अवश्य बढ़ी हैं। सर आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। Now moving further for the closing note, I would like to request Dr. Santosh Kumar, Convener Healthcare Panel KII and Director Ruben Group of Hospital, sir please. Good afternoon, dignitaries and guests, Manoj Mantri ji, and dear friends. Around 5-6 months back, when we were trying to, when the CII new chapter was constituted, and we were trying to find out on priority areas which the CII Bihar state should take up. So there were a couple of issues, and we were very privy of unknowingly about the tripod of the health system, the quality, affordability, and infrastructure, and of course the accessibility. So on these three areas, in fact, the issues and the action plan which we have developed is reflected on all these three areas, and of course for having the improving the accessibility of healthcare in Bihar, we plan to start and organize a health summit, health investor summit in the coming month. For improving quality, we had identified the issues like activities like conducting a training program of healthcare workers on quality, on ISO standards. The different agencies like NABH and CAHO is going to support us on these endeavors. Of course, for affordability, a lot of things will be organized, and we have, of course, European Subhaji and other public sector banks. Not only that, we also plan to organize training programs of the doctors and hospital promoters to make them aware what is the terms like break-even point. Because they are the doctors, they don't know the litigation issues, the things like ROC क्या होता है, कैसे, what are the different issues like PV factors क्या होते हैं, when you want to take money, what are different options. आजकल इंडेक्सिंग BSC से भी और निफ्टी से भी हम लोग we are able to get the cheap fund and other, but people do not know. आपने सही बताया सुरभा जी, that लोगों को ये नहीं पता है कि things like प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, DPR क्या होता है, और बिना DPR किए, बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट किए, if you go to bank or any financial institution, they will not know, because they need to know the numbers.
which are viable or not. Okay, so these are the different areas, different activities we have planned for over next 1 year. And today, the first activity was, of course, conducting a diagnostic study, where we are, where we want to go. We thankful to Ankur Bhai, the PwC, on a pro bono kind of thing. He have done this, and of course, as I said, this is the first activity. So this is my proud privilege to express the vote of thanks to all the dignitaries, and of course, the first and foremost sincere appreciation goes to our esteemed chief guest, Mani Shri Samir Kumar Mahaset ji. He always been accessible to us and guiding force. जब आप आके अपनी विचार रखते हैं तो डेफिनेटली एज यू सेड दैट इफ यू वांट टू चेंज, बिहार में सबसे पहले चेंज लाने के लिए लोगों को बदलना होगा, अपनी मानसिकता को बदलनी होगी, और जब तक बिहार का ग्रोथ नहीं हो, पूरे भारत का ग्रोथ नहीं हो सकता, बिकॉज बिहार is the where we I can say that it is the engine of Indian development. If we are able to change the mindset of the people through our own people efforts and all that, we will definitely be able to achieve our target. To our the thanks, of course, is profusely due to other dignitaries, Sulbaji from Sydney, PwC, WHO partner, of course, Adri. Thank you for joining us in a very short notice, and of course sharing your experience. I know that you have been working with BMGF and all that about identifying the challenges and issues and opportunities, and the way ahead how to implement the different interventions by the government of Bihar. Today's conclave, as I said, has been a pivotal as we unveiled the healthcare vision document 2030. I want to express again our appreciation on behalf of myself and of course CI to the PwC for their remarkable efforts. As I said, it was a pro bono thing in developing this visionary document, and I'm sure that this will serve a guiding principle, kind of outline, which for everybody to kind of pick up the points in your areas and start implementing. I must also acknowledge the tireless efforts of our Vice Chairman, CI, Dr. Satyajit Singh, whose dedication and leadership have been very instrumental in making this conclave a reality. Lastly, I want to thank all the delegates, my friends from hospitals, the promoters and the CEOs of different hospitals, the doctors, the medical fraternity from across the hospital, and of course from my own hospital, Ruban Hospital, for your active participation and patience hearing. In conclusion, I would say that today's deliberations and unveiling of the healthcare vision document 2030 have set the stage for a brighter and healthier future for Bihar. We look forward to continued collaboration, innovation and collective efforts to make our vision a reality. Once again, thank you everybody for your unwavering support and participation. After this lunch break and all that, we are going to have another event, and that is Patient for Patient Safety. I invite all of you to join and again share your experiences. Thank you. Yeah, so I invite Prerna to continue. Thank you so much, sir. Now, I would request Mr. Sachin Chandra, sir, Chairman CII Bihar and Director Swatha Developers Private Limited, and Dr. Satyajit Kumar Singh, sir, Vice Chairman CII Bihar and Managing Director Rural Group of Hospitals, to welcome all the guests with plant pot and bouquet. I would request Dr. Satyajit sir and Sachin Chandra sir to present this bouquet to Minister sir, to this plant pot. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for this beautiful moment. May I now request, sir, please present this token of appreciation to all dignitaries, to all guests.
A little clapping sound will make more brighter this morning. So please, ladies and gentlemen, I request you all to make this conclave, to make this conference more beautiful with your claps. Thank you so much. Dr. Satyajit, Sir, Vice Chairman, CIA Bihar, and Mr. Sachin Chandra, Sir, Chairman, CIA Bihar, welcoming our all guests. Seated on dais. Santosh, the Colonel Health Institute, is one of the first batch. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Minister Sir, for giving us that. We witnessed the first session of this impactful conclave CII Health Take Care Bihar, a way forward to affordable and accessible health infra. There is an arrangement of lunch. So please, I would request you all the guests, kindly have your lunch, and after that, we will begin our second session. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen.